the online class of Phonics Academia School. Today we will study class 7 computer. So today we will do the reading of unit number 1, elements of a computer system, and then we will do the words meaning. So let's start the reading. Elements of a computer system. The parts of the computer. Basically in this chapter we are talking about the main parts of the computer system. So in the previous class you have studied about computer organization, the different parts and functioning of a computer. पिछली क्लास में यू हैव स्टडीड आपने पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में एंड डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट हिस्सों के बारे में एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर किस तरह से काम करता है इसके बारे में आपने पढ़ा था. यू हैव लर्न दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एसेंशियली परफॉर्म द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन. आपने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, जो मेनली क्या मेनली परफॉर्म करती है 3 मेन ऑपरेशंस. कौन से? इनपुट, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, इनपुट फंक्शन परफॉर्म करती है इनपुट डिवाइसेस के जरिए. प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है थ्रू सीपीयू, प्रोसेसिंग करती है, डाटा को प्रोसेस करती है किसके जरिए? सीपीयू के जरिए. आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट हमें आउटपुट देती है किसके जरिए से? आउटपुट डिवाइसेस के जरिए. सो इनपुट, processing and then output. The computer takes raw data and processes it to give result. कंप्यूटर क्या करता है? हमसे raw data लेता है. raw data mean unprocessed data, जिसके ऊपर अभी हमने वर्कआउट नहीं किया होता, इस पर हमने अभी काम नहीं किया होता, हमने टेबल्स और रोज की फॉर्मेट्स को हमने अरेंज नहीं किया होता, ठीक है. इनपुट इज fed into a computer through input devices and output is given through output devices. So इनपुट कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइसेस के लिए. आपने बहुत सी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसा कि आपने कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, ठीक है. दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. फिर आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल रीड द टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Basically hardwares are the things that we can see and that we can touch. So all the devices of computer that we can see and touch are hardware, but the things, but the programs that we can not see and that we cannot touch are called software. So softwares are the program instructions that we give to the computer to solve any problem. Okay. So computer being a machine, कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते डज नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर खुद से सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. इट विल डू ओनली व्हाट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू. ये वो ही काम करेगा जो उसको करने के लिए कहा जाएगा. इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन टू कंप्यूटर टू कैरी आउट टास्क. कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. These instructions are given to computer in the form of programs. और ये सब इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी जाती हैं? ऐसे ही उठा के नहीं दी जाती, एक प्रोग्राम की फॉर्म में, एक सीक्वेंस की फॉर्म में दी जाती हैं. A set of instructions consisting of one or more program to carry out a particular task is called software. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं. सॉफ्टवेयर is an essential component for successful functioning of any computer system. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है. A vast variety of software is used to get the computer to do a variety of tasks. हमारे पास एक वास्ट वैरायटी, बहुत ही ह्यूज वैरायटी मौजूद है सॉफ्टवेयर्स की. इसलिए मौजूद है कि डिफरेंट तरह के काम वो परफॉर्म कर सकें. These softwares are broadly classified into 2 categories, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, 2 तरह से डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यू विल लर्न अबाउट दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर. द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म इनपुट कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड आउटपुट फंक्शंस आर टर्म्ड एज हार्डवेयर. ओके, दिस इज द सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. That hardwares are the component that we can touch, that we can see. So same, they are saying that storage devices and output functions are termed as hardware. Computer hardware consists of various devices capable of performing a variety of tasks, but only as directed by the software. ठीक है. So hardware can perform any task, but we have to give instructions in the form of software, in the form of program. Software is basically a fed program
we give instructions in the form of software and hardware give us the result. It can be said that the computer hardware is the engine and software is the fuel used to operate the engine. They tell us the importance of hardware and software. They both are linked with each other. The hardware devices that are connected directly to the computer are said to be online devices, whereas the devices used separately and not connected to the computer are termed as offline devices. The hardware devices that are connected to the computer are called online devices, but that devices that are not connected to the computer system are called offline devices. Hardware devices operating in a computer system are categorized into input devices, output, storage, and central processing devices. So in hardware devices, the devices come are input devices, output devices, storage devices, central processing CPU, input devices. These are the hardware devices. Output devices and secondary storage devices together are called peripheral devices. आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज को हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि हमें कनेक्ट करती हैं.